So first, what I will do uh, before heading towards the further MCQs of organic, I am going to discuss the two queries that are shared by, I think, Shazre. One is question number 5. They have given you opt 1E in this question. And if you look at the formula, they are saying that it is CH3, then 1, 2, 3, 4, 5 CH2, and sixth one is CH, and then double bond CH2. It is the molecule which is subjected to a thermal cracking, and which combination of a compound W, X, Y, and Z can be obtained. Okay. So okay. So they have provided us a W, a compound, then X compound, then a compound Y, and then a compound Z. So if we look at W, CH2 double bond CH2. If we look at X, it is CH3, CH double bond CH2. And if you look at Y, it is CH3, CH2, CH3. And then if you look at Z, it is CH2 double bond CH, CH double bond CH2. So they are asking which combination of compounds can be obtained. Okay. And if we look, we can easily observe that all of these compounds are either alkanes and alkenes, right? And they have a smaller number of carbons than the molecule which is undergoing the thermal cracking, that is oct1e. So it means that uh, all of these compounds can be, formed from this molecule. So it means that the correct answer will be A. So, but the thing over here is, if can anybody, Shazre, if you know the correct, the question, the air, because the air is not mentioned over here. So we can, so that the alkene is C8H16, so it can produce C2H4, it can produce C3H6, it can produce C3H8, and it can produce C4H6 as well. So these all compound can be produced from this one. So according to this, the correct answer will be A. जी ये clear है सबको? Now, if you look at the last image shared in the group, we have a carbon, a molecule,
No, there can be more than one possibilities because all are, less than uh, all the compounds that are W, X, Y, and Z are less than 8. But Shazre, here the reference number is not correct. So I doubt that. Okay, 1 minute. There is an important thing they are saying, which combination of compounds. So they are saying which combination of compounds. Okay, when they are talking about the combination, then the correct answer can be a different. These all compounds can be obtained, but if they are asking about which combination of compounds, then let's have a look. Which combination of compounds can be formed? So look over here. I'm doing it again to make you understand. We know whenever a cracking takes place, we will get either alkene and alkane, right? We get the mixture of alkene and alkane. So if we look, for example, if this can be broken from here, then this will be converted into CH2 double bond CH2, and alkene will form. And now we are left with the 6 carbons. So on the basis of that, we can conclude that Z is not produced in this combination, because if Z is produced, then we are left with only 4 carbon molecule. The remaining part will be 4 carbon. So there is a no compound, either W, X, and Y have a 4 carbons. So we can exclude Z from the combinations. Is this understandable? जी ये पॉइंट क्लियर है सबको? हम Z इसीलिए कंसीडर नहीं कर रह सकते क्योंकि अगर Z बनेगा तो रिमेनिंग आपके पास 4 कार्बन वाला कंपाउंड, जो रिमेनिंग कार्बन बच रहे हैं वो 4 हैं. नो, आंसर ए नहीं है. अगर कॉम्बिनेशंस की बात की जाए तो आंसर बी हो सकता है. ठीक है, ए तो नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि अगर Z बन गया तो रिमेनिंग आपके पास 4 कार्बन बन रहे हैं. ठीक है, तो 4 कार्बन की बेसिस पे आप एक कॉम्बिनेशन नहीं ऑब्टेन कर सकते, या आप एक्स एंड डब्ल्यू को नहीं फॉर्म कर सकते, क्योंकि उसके बाद आपके पास 5 कार्बन जो हैं, अगर एक्स और वाई फॉर्म होंगे तो 6 कार्बन चाहिए, और अगर एक्स और डब्ल्यू फॉर्म होंगे तो 5 कार्बन चाहिए. बट अगर जेड फॉर्म हो रहा है तो हमारे पास पीछे कार्बन ही 4 बच रहे हैं. तो इसीलिए ए आंसर तो नहीं हो सकता, और वो सारे आंसर नहीं हो सकते जिनमें जेड प्रेजेंट है. ठीक है, तो इस बेसिस पे हम ए को रॉन्ग कंसीडर कर सकते हैं, और ए के बाद हम सी को भी रॉन्ग कंसीडर कर सकते हैं. ये पॉइंट क्लियर है सबको? ओके, बट हम ना, दे डिडंट मेंशन the amount, so we will consider the amount must be a 1 mole. If they do mention 1.5 or some fraction, then we can consider that. Otherwise we cannot consider that it can be 1.5. अच्छा, यहां तक सबको क्लियर है?
ओके, तो अगर ये फॉर्म हुआ तो देखिए रिमेनिंग कितने कार्बन बच रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे 6 कार्बन बच रहे हैं। और अगर 6 कार्बन से तो ये यहां से रिमूव होगा, और जब ये यहां से रिमूव होगा तो आपके पास प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि देखें यहां से एक हाइड्रोजन बचा, अगर वो हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे एक अल्केन मिलेगा, CH3, CH2, CH3। ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? ओके, सो दिस इज X एंड दिस इज Y। It is C2H4 and it is C3H8। Okay, then in that case we have one issue over here, and that is that if I'll make this one, then I am left with CH2, then CH, then double bond CH2। So we have a more hydrogens in this case। अगर हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स काउंट करें तो हमारे पास देखें बेसिकली इस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या था, C8H16। और यहाँ पे क्या बच रहा है, अगर हम इनको काउंट करें तो हमारे पास C2H4 प्लस C3H8 एंड प्लस C3H6। अगर हम ये फॉर्म करते हैं तो ये आपका कौन सा कंपाउंड है, एक मिनट, ये आपका एक कंपाउंड है। तो अगर आप काउंट करें तो हमारे पास कार्बन तो 8 हो रहे हैं, बट हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 4 + 8 12 एंड 12 + 16 6 18। तो अगर देखा जाए तो इसका मतलब है एक्स वाई और जेड, जो सी बी ऑप्शन है, WXY, सॉरी मैंने गलत मार्क किया है, WXY, दैट इज योर बी ऑन ऑप्शन, दैट गोज रॉन्ग। जी, तो बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, बी ऑप्शन जो है रॉन्ग है। जी, ये बात सबको क्लियर हो गई, दैट बी ऑप्शन इज रॉन्ग। तो इट मींस मुझे सी और ए को दोबारा रिकंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि बी ऑप्शन में C8, अगर हम बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को देखें तो उनका कॉम्बिनेशन C8H18 जो है रॉन्ग फॉर्म हो रहा है, जबकि हमारे पास इनका कॉम्बिनेशन क्या आना चाहिए था, C8H16 आना चाहिए था।
ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? ओके, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल नेक्स्ट इंटीजर ले लूं और मैं 1 मोल के बजाय 2 मोल्स अज्यूम करूं, तो यहाँ पे कार्बन कितने हो गए? 16। और अगर आप यहाँ पे काउंट करें तो 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12। तो हमें अगर वहां पे भी 16 कार्बन करने हो तो हम किस तरह कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे 3 प्लेस करूं तो टोटल कार्बन 16 हो जाएंगे। जी, अगर मैं यहाँ पे 3 कोएफिशिएंट C2H4 के फ्रंट में प्लेस करूं तो हमारे पास टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे? 16। यस, नाउ काउंट द हाइड्रोजन्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। Here I have a 12 hydrogens. Here I have a 6 hydrogens. Here I have a 8 hydrogens, and here I have a 6 hydrogens. If I add these number of hydrogens, 6 plus 6 gives me 12. 12 plus 8 gives me 20. 20 plus 12 gives me 32. So I have a 32 hydrogens over here, and here also I have a 32 hydrogens. So in this way, this equation is completely balanced, and we are getting all the 4 kind of compounds in the combination W. Oh, I think it was W, it was X, and then Y and Z. So A is the correct answer, in which the examiner says that all the 4 products. Now is it understandable to everyone? जी, सबको क्लियर है? Okay. Now the next query contains a compound called carbon. Just give me a minute. Okay. So if you look at the structure of carbon, it will be like this: a hexagonal ring of carbon atoms, right? Here I have a CH3. I am just leaving the empty bonds for each hydrogen. Here I have a double bond. Here I have a double bond with O. Here I have a 2 single bonds with a hydrogen. Here I have a 2 single bonds with a hydrogen. Here 1 bond with a hydrogen and 1 bond with a carbon that is bonded to another carbon, and that carbon have a 2 hydrogens. And then another carbon having a 3 hydrogens. So is this understandable to everyone? Now, if you look at the question, they are asking about the sigma bonds and pi bond. So if you recall, sigma bond is the first
bond between two atoms. And if we talk about a pi bond, so pi bond is the bond is the bonds formed between two atoms after the first bond, that is a sigma bond. ये point clear है सबको? Okay, let me count, Umar. So sigma bond is the first bond between the two atoms, and the pi bond is the bond that is formed after the sigma bond between the two atoms. So I am going to encircle all the sigma bonds with the blue line and all the pi bonds with the red line, so you can easily count. So so have a look. These all bonds are the sigma bonds, but the places if you look where there are double bonds, out of these two bonds, there is a one bond which is formed first or which is formed initially. So that bond is considered as a sigma bond as well. So now all these bonds are sigma bonds. Is this understandable to everyone? Okay, so how many sigma bonds we got? One, two, three, four, five, six, seven, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25. Now let's come to the pi bonds. So 1, 2, 3. So there are 3 pi bonds. So if there are 25 sigma bonds and 3 pi bonds, then the correct answer according to that is D. Now is this understandable to everyone? Okay. Now we are moving towards the rest of the organic questions that we have to do. I think we have to start from question number 19, right? If I'm not wrong. Okay. Okay, yes, we have completed the 19, and if I remember, the answer was isomerization over here. जी क्वेश्चन नंबर 19 तक सबको क्लियर था?
Now let's start question number 20. Okay. In which reaction is a carbocation is an yes, very good, Tisha. The correct answer is C. If you recall the mechanisms of all of these reactions, here, if you see, which is a free radical, and in free radical, radicals are formed, no cation is formed, so C goes wrong. Is this clear? If we talk about B, it's nucleophilic addition. And if you recall the mechanism or go through the mechanism, in nucleophilic addition, no carbocation is formed. So D goes wrong as well. Now have a look at B. Here we have a halogenoalkane and it is undergoing nucleophilic substitution and it is a primary halogenoalkane. And if there is a primary halogenoalkane followed by follow SN2, at intermediate is a transition state, not a carbocation, so B goes wrong as well. So we are left with the A, where there is an electrophilic addition of an alkene, and in electrophilic addition of an alkene, in the mechanism, there is always a formation of a carbocation. Is it clear to everyone? So if you want to make a key point, you can do it, and you can write that carbocation is formed during electrophilic addition of alkenes and nucleophilic substitution of halogenoalkane. If you will write tertiary halogenoalkane, because tertiary halogenoalkane undergo SN1 mechanism, and that SN1 mechanism, uh, in the first step, a carbocation is formed. Is this clear to everyone? जी, तो ये पॉइंट है याद रखने वाला कि कार्बोकैटाइन सिर्फ दो मैकेनिज्म्स में फॉर्म होता है, जो हम मैकेनिज्म्स पढ़ते हैं उनमें से एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, जब टर्शरी अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट हो रहा होगा। जी, ये पॉइंट क्लियर है सबको? 21. The compound 1,2 dichloroethene has been used as an industrial solvent for a number of compounds including fats, camphor, caffeine. If I will draw the structure, they said 1,2 dichloroethene. It means that
Both the chlorines are on the different carbons, and both the carbons have one hydrogen as well. And the molecular formula will be C2H2Cl2. Is this understandable? Okay. Yes, I think so. Let me see. Which statement about this compound is incorrect? The compound can be catalytically hydrogenated. Yes, it have a double bond, so it can be hydrogenated. So the statement is correct, which means it's the wrong answer. Yes, yes, very good. Sisha, Umar, Aisha, Ibrahim, and Shazre already given the correct answer. The compound is the planar molecule. Yes, there are two carbons and a double bond, which makes it a planar. So the statement is correct, which means B goes wrong. The compound shows cis-trans isomer. Yes, each double bonded carbon have a two different groups, so it can show a cis-trans isomerism. Yes, Sarah, your answer is correct too. Good. So we are left with a D. So D is the correct answer. Because they are saying that it shows optical isomerism. So no, there is no chiral center, so it cannot show optical isomerism. A, B, and C, all the three statements are correct for this compound, and they are asking for the incorrect one. So D is the incorrect. Catalytically hydrogenated. So what will happen if I will react with the hydrogen in the presence of nickel? A double bond can be broken down, and we have a two hydrogens in a molecule. So that is called catalytically hydrogenated. Is it clear, Ibrahim? Okay. Now, question number 22. Which term describes the action of sodium hydroxide, aqueous, or bromoalkane? Am I lagging? Yes. Am I audible to everyone now? Okay. Okay. Don't send me the message on hosts. If you want to ask anything, send me the message on a co-host. Okay. Now, question number 22. Which term describes the action of aqueous sodium hydroxide in bromoalkane? It is a nucleophilic substitution reaction. When we use aqueous sodium hydroxide, then it is a nucleophilic substitution reaction. So D is the correct answer. Yes, very good, Noor. Is this clear to everyone? Okay, it's a bromoalkane, right, Hassan? So
Okay, you are talking about 21. Remind me in the end of the class. I will repeat now. Question number 23. Which compound would undergo nucleophilic addition? So let me recall you. Nucleophilic addition can be undergone by alkyl halide and alcohols. Both undergo nucleophilic addition. Yes, so it's an alkene, wrong answer. It's an alkyl halide, correct. It is an aldehyde, wrong answer. It is an alkene, wrong. So the correct answer is B. Okay, Abdurrahman. So is it clear to everyone? If we talk about an aldehyde, you have to remember that aldehyde undergo nucleophilic. Okay, sorry. I was reading a substitution. My mistake. Yes, you guys are correct. Shazre, Tuba, Sara. It's nucleophilic addition, and nucleophilic addition is undergone by either aldehyde or ketone. So C is aldehyde. So C is the correct answer. I initially read it nucleophilic substitution. That's why I said alkyl halide and alcohol. Okay, now question number 24. Trichloroethene is widely used as a dry cleaning agent. अब्दुलरहमान हेलोजिनोएल्केन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात हो रही है, तो इसलिए सी करेक्ट आंसर है। जी सही कह रहे हैं आप सब। With which of the following does trichloroethene react to give a chiral product? Okay, see what is over here? A carbon-carbon double bond, right? So it's an alkene. Alkene reacts with a bromine. Alkene reacts with a hydrogen chloride, but alkene do not react with either NaCN or NaOH, right? So C and D are wrong. And if we look at A, so what will happen when it reacts with a bromine? That double bond converts into a single bond, right? And we have a one bromine over here and one bromine over here. So now if you look at this carbon have a four different groups. On one side it's bromine, on one side it's chlorine, on one side it's hydrogen, and on the fourth side it's CCl2Br. So the correct answer is A, and B goes wrong as well. Yes, is it clear to everyone? Now question number 25. Halogenoalkanes are important molecules in organic synthetic reactions. In particular, they undergo a range of nucleophilic reactions, which reaction produced by only SN1 mechanism. If they are talking about SN1 mechanism, then it means there must be a tertiary halogenoalkane, right? Yes, Hamna, very good. Susi, yes, Tisha, very good. It's a primary, so wrong. Again, it's a primary, right? So B goes wrong as well.
Yes, Hoor, very good. If you look at this one is a secondary. So it can undergo either SN1 or SN2. So this goes wrong as well. And this is a tertiary. Why? Because if you look, there is a carbon and that carbon is bonded to 3CH3 groups and on one side I, that makes it tertiary. So D is our correct answer. Is this clear to everyone? जी यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें. देखें, उन्होंने SN1 मैकेनिज्म पूछा है. अगर हम प्राइमरी हेलोजिनो अल्कीन की बात करें तो वो SN2 करता है. अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो it will undergo SN1 and SN2 both. It can undergo either one. And on tertiary SN1 करता है. So we look at the carbon which is bonded to a halogen. We have to look at the carbon which is bonded to a halogen. जी ये पॉइंट क्लियर है सबको? So a carbon that is bonded to a halogen must have 3 alkyl groups, then it is a tertiary. And if a carbon bonded to a halogen have a 2 alkyl groups, then it is a secondary. Otherwise, it's a primary. Yes. Is it clear, Shazre? We have to look at the carbon which is bonded to a halogen in each case. And that carbon, if is bonded to 3 carbons, then it is tertiary. Otherwise, if it's bonded to 2 carbons, then it's secondary. And if it's bonded to 1 carbon or no carbon, then it's a primary. Okay. Now question number 26. Ethanol CH3CHO can be reduced using an aqueous methanolic solution of NaBH4 as the reducing agent. This is a nucleophilic addition reaction. What could be the first step of the mechanism? If you recall, the nucleophilic addition reaction अगर आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म रिकॉल करें, नो हूर एंड उमर यू बोथ आर रॉन्ग. अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या होता है कि जो कार्बोनिल कार्बन है उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है. यस सारा एंड अब्दुल रहमान, योर आंसर्स आर करेक्ट. और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है. सो व्हाट विल हैपन, a nucleophile which have a lone pair will attack on a partial positive carbon and then this bond is broken down. Is this understandable to everyone? जी ये मैंने न्यूक्लियोफाइल रिप्रेजेंट किया, ये कोई भी स्पीशी हो सकती है जिसपे लोन पेयर हो. ये पॉइंट क्लियर है? तो ये मैकेनिज्म इस तरह प्रोसीड करता है. यस शाजरे, योर आंसर इज करेक्ट एज वेल. सो nucleophile must have a lone pair, so these are electron deficient, so A and B goes wrong, right? ये पॉइंट क्लियर है? यस, नाउ योर आंसर इज करेक्ट.
Yes, Umar, your answer is correct too. And here they are saying, अगर आपको ये याद नहीं आ रहा तो अगर ये चीज याद है तो ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन एटम पे अटैक होगा कार्बोनाइल के, जो कि अकॉर्डिंग टू द रूल गलत है कि अटैक किस पे होगा, पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे होगा। और वो कौन करेगा? लोन पेयर वाला सब्सटेंस करेगा, जिसके पास लोन पेयर होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। जी क्लियर हो गया सबको? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27, which compound is both chiral and acidic? Acidic, remember, always refers to a carboxylic acid in AS level. So, on the basis of that, what I can conclude that B and C are wrong because both doesn't have a COOH group. So now we are left with the A and D. So who can tell me the correct answer? Yes, Tisha and Aisha, you are correct. Umar, why C? We just marked C as a wrong because, yes, very good, Shazre. Because C have a no acid. No, where is CO2H? It is CO2C. If you will draw the structure of this, it will be like this. It's an ester basically. How it could be a CO2H? No, it's not CO2H. See, it's CO2C. ये कंफ्यूजन क्लियर कीजिएगा। CO2H तब हो सकता था जब इन्होंने इसको इस तरह लिखा होता HO2C. Then it can be an acid, but in this way it is not an acid. जी उमर और अली, आप लोगों की कंफ्यूजन क्लियर है? Yes, Musa, very good. Sara, good. Hoor, good. Noor, your answer is wrong. Okay. Now we are left with the A and B, A and D. Yes, Umar, very good. So in A, all the carbons are double bonded. So there is no chiral center in it. So A goes wrong as well. So our correct answer is D. Yes, is it clear? Yes, very good, Abdurrahman. Now, what about 28? Who can tell me the correct answer? Yes, Shazre, good. Abdurrahman, good. Tisha, good. Because C doesn't have a acid, Ibrahim. Yes, Umar, Musa, Hoor, Hamna, Sara, Noor, Ali. Very good. Because it have a lone pair. Yes, Halima, very good. जी यहाँ तक क्लियर है सबको? जी मुझे को होस्ट पे मैसेज भेजिए, अगर किसी ने भी कुछ भेजना है तो को होस्ट पे नहीं भेजिए प्लीज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मेनी chiral centers are present in the testosterone molecule? So you have a structure above and you have to identify the number of chiral centers. Who can tell me the correct answer? Just go through it quickly and identify the correct answer. Okay, Musa correct, Aisha correct, Tisha correct, Tuba correct answer, Sara correct, Abdurrahman wrong, Umar correct, Ibrahim wrong, Shazre wrong, Halima wrong, Noor correct, Hoor wrong. Okay, so as if I told you, the group having a CH2, the group having a double bond, and the group carbon having a CH3, these all are not considered as a chiral center. ये point clear है? Yes, Noor, now your answer is correct. Hassan, your answer is correct.
ठीक है, इन तीनों कार्बन पे कायरल सेंटर नहीं हो सकता, और इसी तरह अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो वो भी कायरल सेंटर नहीं हो सकता। तो उसी की बेसिस पे देखें, दिस 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 दिस, मैं इन सबको रॉन्ग मार्क कर सकता हूं, इस कार्बन को भी रॉन्ग मार्क कर सकता हूं क्योंकि ये भी कायरल नहीं है, ये CH2 है, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, दिस वन गोज रॉन्ग, दिस वन गोज रॉन्ग, दिस वन इज रॉन्ग, this is CH2, this is CH2. Yes, हमना गुड, हलीमा गुड जी। तो ये मैंने सारे हटा दिए। अब जो रिमेनिंग हैं उनको जरा हम चेक करेंगे। अगर मैं इस वाले को चेक करूं तो इसके मुझे चारों साइड्स पे बॉन्ड नजर आ रहे हैं, एंड ऑन ईच साइड वी हैव अ डिफरेंट ग्रुप्स। So this is a chiral, I cannot mark it as wrong. This one is a chiral because there are 3 bonds, which means that the fourth one is a hydrogen over here. If you look at this one, Munir, your answer is completely wrong. So we have a 3 bonds, so fourth one is a hydrogen, so it is a chiral as well. And if we look at this one, it have a 3 bonds and a 1 hydrogen, so it is chiral as well. If you look at this one and then this one, yes Munir, now correct. So see, these are the carbon atoms which have a 4 different groups attached to them. किसकी बात कर रहे हैं आप अब्दुल रहमान? इस वाले की बात कर रहे हो अब्दुल रहमान? You are talking about this one? Okay. अब देखें, इस बात को गौर से समझिएगा। इसके एक तरफ ये CH3 लगा हुआ है, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये वाला ग्रुप है, तीसरी तरफ देखें तो ये ग्रुप है, और चौथी तरफ देखें तो ये ग्रुप है। तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इसीलिए ये कायरल है। चारों तरफ आइडेंटिकल CH3 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 थोड़ी लगा हुआ है। तो हमारे पास कितने कायरल कार्बन्स काउंट हुए? 6. सो डी इज अवर करेक्ट आंसर। जी क्लियर है सबको? ओके, क्वेश्चन नंबर 30. The compound known as a gamma-linolenic acid is found in significant amounts in the seeds of the evening primrose plant. There is an evidence that the compound may help patients with the diabetes. How many cis trans isomers does gamma-linolenic acid have? Yes. So to identify the cis trans, we have to look at the carbons which are forming double bond, and those carbon have a must have a 2 different groups attached to them. Yes, Noor, Umar and Tisha, your answers are correct. So see, these 2 carbons have a double bond, these 2 carbons have a double bond, and these 2 carbon have a double bond. So if we look at each carbon, double bonded carbon, it have a 1 hydrogen and 1 this whole group. This carbon have a 1 hydrogen and 1 whole this group. This carbon have a 1 hydrogen and 1 this group. So if you are observing that each double bonded carbon have 2 different groups,
to whom it is attached. So it means this, this, and this. All the three double bonds can form a cis trans isomer. Yes, Hoor and Hamna, your answers are correct. Yes, Ibrahim, your answers are correct. So what we are observing that there are three double bonds that can form a cis trans isomer, and for that now we can use this expression 2 raised to the power n, where n is a number of carbon-carbon double bond show cis trans. तो ऐसे हमारे पास कितने डबल बॉन्ड्स हैं? 3 है. तो 2 raised to the power 3 gives us 8. Okay, so it means C is the correct answer. Yes, Munir, your answer is correct. 2 raised to the power 3 is 6. It's not 6, it's 8. Sorry. जी ये clear हो गया सबको? If anybody have any doubt, kindly ask me, please. Okay, now question number 31. Polymerization of chloroethene gives PVC. How does carbon-carbon bond in PVC compare with the chloroethene? Okay, let me see. In chloroethene, there is a carbon-carbon double bond and there is a one chlorine, right? Now, when it becomes a PVC polychloroethene, then it goes a double bond, right? Oh, sorry, the double bond turns into a single bond. So now, what is the comparison? If there is a double bond, then it means this bond is shorter, and this is a single bond, which means it is a longer, and a shorter bond is a stronger because of a lesser distance, and a longer bond is a weaker because of a higher distance, greater distance. So that means our correct answer is B. Yes, Noor, Hoor, Munir, and Shazre provided a correct answer. जी ये क्लियर है सबको? जो शॉर्टर होगा, डिस्टेंस कम होगा तो स्ट्रॉन्गर होगा, लॉन्गर होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा एटम्स के बीच में तो वीकर होगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 32. PVC stands for polyvinyl chloride. This क्लोरोइथीन का को विनाइल क्लोराइड भी कहा जाता है, और जब वो पॉलीमराइज होगा तो वी विल देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों एटम्स के बिटवीन अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगी तो डिस्टेंस कम होगा. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शेयर हुए हैं तो अट्रैक्शन वीकर होगी, जिसकी वजह से बॉन्ड लॉन्गर हो जाएगा. Okay, now question number 32. When gaseous chemicals are transported by road or by rail, they are classified as flammable, non-flammable, or poisonous. Which commonly transported gas is non-flammable? इनमें से कौन सी गैस non-flammable है? Yes, Noor, good. Yes, Tisha, good. Musa,
Hydrogen is a highly flammable gas. No, it's not flammable, Shazre. Sorry, it's a flammable one. You all know that. What about the hydrocarbons? All hydrocarbons are flammable, right? And if all hydrocarbons are flammable, then A and D goes wrong. And we have studied in that hydrogen is also a flammable gas, so B goes wrong as well. So it means C is the correct answer. No, oxygen is not flammable. Oxygen helps in combustion, but oxygen itself doesn't burn. Yes, it helps, but what is when a fire is there, what is burning? Normally a hydrocarbon is burning. And if there is no hydrocarbon, then oxygen cannot burn as well. Yes, Alicia. So is it understandable to everyone? Question number 32. So you have to remember this point, that hydrogen and hydrocarbons are flammable. Is it clear? Okay, question number 33. When heated with a chlorine, the hydrocarbon 2,2 dimethyl butane undergoes free radical substitution. Yes, if it's an alkane, then it will undergo free radical substitution. In propagation step, the free radical X is formed. Okay, Ibrahim. When you light the matchstick, actually what is burning? The substance that is on the tip of the matchstick. And then it all goes. There is no fire in the air but there is oxygen in the air. So if it's a flammable, then the air may catch the fire as well. Are you getting the point, Ibrahim? Yes, Tisha, Hoor and Shazre give the correct answer. Yes, Noor, correct. Umar, I think your answer is wrong. How many different forms of X radical are possible? Yes, Ali, your answer is correct too. So see over here, if a hydrogen is removed from this place and this, or this place or this place, these all leads to the same structure. That's why I marked with the same color. Then a radical is formed on this carbon as well, and a radical is formed on this carbon as well. So in total, if we look, there are 3 possible different forms of a X radical. There are 3 forms, Munir, not 2. So the correct answer is C. Umar and Munir, do you guys understand? Okay. Now, okay, Umar, what if I consider this as a chain? And I can consider or this as a chain, or I can consider this as a chain as well. There is a no difference. They all are the same because all the
CH3s are bonded to a same carbon. So in each case, one carbon becomes a part of the chain and the rest of the two becomes the branches, but the branches are on the same carbon, which is carbon 2. Yes, Umar, did you understand? In either way, if I named this one, the name will be like this. How? Okay, try to name in each way. I selected the straight chain by a red color. So see, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, right? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Now, in each case, if you try to name it, you will get the same name. So all the methyl groups are on the same carbon. So there is no difference on these three CH3 groups. Yes, is it clear now? Yes, Omar. Okay. No, Shazre. Okay, Noor. Yes, yours is correct. Ibrahim, wrong. Which compound exhibit both cis trans and optical isomerism? Yes, Shazre and Tisha, your answers are correct. Okay, if you look in A, there is no chiral. And if there is no chiral, then it means A goes wrong. Here we have this carbon as a chiral in B. No, Umar, A is wrong because there is no chiral center. Yes, Hur and Umar correct. This carbon is a chiral, but if you look at this carbon have a 2 hydrogens, so it means it will not form, not show cis trans. Yes, Tuba, you are correct too. And if you look over here, again, no chiral. So it means the D is the correct answer. Yes, Musa and Munir, correct. Very good. Uh, you are talking about which option, Shazre? Oh, sorry, it's yeah, B. Because see, this double bonded carbon have a 2 same groups, 2 hydrogens. The double bonded carbon must have a 2 different groups attached to it, then it will show cis trans. Otherwise, no. Cis trans can be shown or can be observed. Now, question number 35. Pentanol C5H11OH has 4 structural isomers that are primary alcohol. How many of these primary alcohols contain a chiral carbon atom? Okay, so we need to draw a 5 carbon alcohol which are primary. So 1, 2, 3, 4, 5, and here I have a OH. So see, it's a primary because OH is bonded to a carbon. This group is bonded to a carbon. This carbon and this carbon is bonded to one carbon. Let me check.
Noor. So can I draw more primary alcohols? If I'll make a chain of 1, 2, 3, 4 OH groups and place a one branch over here. How A? Because A says that there is a zero chiral, so we have to work on it. We have to first look. So that's what I am doing. 1, 2, 3, 4, and then OH and a carbon placed over here. So these are the three structural isomers which are primary alcohols. Yes, Halima, Musa, Noor, and Ibrahim are correct. Okay. Now, if I'll try more, 1, 2, 3, 3 carbons on the in the straight line, then OH, and both the carbons are over here. So these are the four structural isomers which are primary alcohol. So all of them are primary. Okay. But if you look over here, there is a no chiral center in this molecule, no chiral carbon in this molecule as well, no chiral carbon in this molecule as well. But if you look at this carbon is a chiral carbon, right? So out of four, one structure is there which have a chiral carbon. So our correct answer is B, because they are asking about the primary alcohol which have a chiral carbon atom. Yes, Tisha, correct. जी, ये समझ में आ गया सबको? जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? Okay. Question number 36. So see, look at the structures, Munir, the four structural isomers which are chiral. So we only find chiral over here, a chiral carbon, and there is a no chiral carbon in other ones. So that's why B is the correct answer. Now question number 36. Okay, the formula of CH3 can be represented an anion, a cation, or a free radical. Species with the molecular formula CH3 can act as an electrophile, a free radical, or a nucleophile, depending upon the number of outer shell electrons on the central carbon atom. How many outer shell electrons must be present for methyl to act in these different ways? Okay, Tisha and Umar, let me see, but I think your answer is correct. Okay, Noor. So see, if we talk about an electrophile, it is electron deficient. Yes. A free radical having the one which have a unpair electron, and a nucleophile have a lone pair. ये point clear है सबको? Yes, Hoor, your answer is correct too. So, अगर आप मीथेन को कंसिडर करें तो उससे ये काम समझना आसान हो जाएगा. Yes, Ali, your answer is correct too. अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए तो CH3 बन जाएगा, और अगर वो ऐसे रिमूव हो
कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी निकल जाए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, यानी कि ये अब क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। और इसके पास कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसका मतलब है कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इसका मतलब है कि ए और बी में से कोई एक आंसर हो सकता है और सी और डी रॉन्ग हो जाएंगे। ये पॉइंट क्लियर है सबको? इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। देखिए, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अगर आप कार्बन की बात करें तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच हैं और कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो इट मींस ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इस वक्त इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस वजह से ए और बी करेक्ट हो गया। जी क्लियर है अब? ओके, नाउ it have a 4 electrons on carbon and there are 3 hydrogens। तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन सब देखें कितने हो गए कार्बन के? अराउंड 7। और एक अनपेयर है, और इस अनपेयर होने की वजह से ये क्या कहलाएगा? रेडिकल कहलाएगा। तो अगर इस बेसिस पे देखें तो ये ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो गया, बी। तो इट मींस ए करेक्ट है। सही है? क्लियर होगा ये? और अगर इसी तरह कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन हो और यहाँ पे इसके अलावा इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी आ जाए तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक लोन पेयर होगा, जिसकी वजह से ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा जब इसके, सॉरी, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा जब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। यस, इज दिस अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन? जी, यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, लेट मी चेक। क्वेश्चन नंबर 37, which halogenoalkane will undergo SN1? SN1 में क्या होता है? कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो हेलोजिनो क्या होना चाहिए? टर्शरी होना चाहिए। तो टर्शरी आपके पास देखें, and produces a yellow precipitate when silver nitrate is added। तो येलो प्रेसिपिटेट सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने पे आयोडाइड आयंस की वजह से आते हैं, जिसकी वजह से हम जो है पहले तो इन दोनों को रॉन्ग कर देंगे क्योंकि इन दोनों में क्लोरीन है। यस उमर अब्दुलरहमान एंड हूर, योर आंसर्स आर करेक्ट। अब हमारे पास 1 आयोडोब्यूटेन बचा और 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन बचा। तो 1 आयोडोब्यूटेन की बात की जाए तो 1 2 3 4 और फर्स्ट कार्बन पे आयोडीन लगा हुआ है, विच मेक्स बी रॉन्ग एज वेल बिकॉज इट्स अ प्राइमरी। और अगर ये प्राइमरी है तो ये कौन सा मैकेनिज्म करेगा? SN2 करेगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 38, the product obtained by cracking an alkane X are methane, ethene and propene. The mole fraction of ethene is 0.5, in the product is 0.5।
What is the identity of X? ओके, देखें, टोटल याद रखें, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन हमेशा जो है 1 के इक्वल होता है। तो अगर इथीन का C2H4 का मोल फ्रैक्शन 0.5 है, तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन, इथेन, मीथेन, इथीन, प्रोपीन, तो इन सब का मोल फ्रैक्शन की वैल्यू, सम की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? जी, ये पॉइंट सबको क्लियर है? ये रूल है बेटा, ये फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन होने की वजह से जो फ्रैक्शन का सम है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? अगर हम किसी भी चीज के फ्रैक्शंस कर रहे हैं तो उन फ्रैक्शंस को जब हम एड अप करेंगे, सो वी विल गेट द 1। सो दैट इज द सेम रूल। दे हैव गिवन यू द मोल फ्रैक्शन, दे आर नॉट गिवन यू द मोल्स। ओके, तो इन सब का सम क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो अगर हम अज्यूम करें कि ये 0.5 है, तो इन दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 0.25 और 0.25 होगा। ये पॉइंट यहां तक सबको क्लियर हो गया? जी, ये वाला पॉइंट सबको यहां तक क्लियर है? चलें, एक काम करते हैं उमर, अगर C6H14 से मैं बनाऊं ये तीनों चीजें, यानी कि CH3, सॉरी, CH4 प्लस C2H4 प्लस C3H6, राइट? तो इस वक्त तीनों के मोल्स 1 1 और 1 बनेंगे, और अगर 1 1 1 बनेंगे तो इसका मतलब है कि हर एक का मोल फ्रैक्शन क्या आएगा? 0.33, 0.33, 0.33। ये पॉइंट क्लियर है सबको? एक एक केस की बात हो रही है, क्योंकि अगर मैं बैलेंस करूं तो C6H14 से 1 मोल मीथेन बनेगा, 1 मोल इथीन बनेगा, 1 मोल प्रोपीन बनेगा। तो अगर मोल फ्रैक्शंस की बात की जाए तो तीनों का मोल फ्रैक्शन 0.33, 0.33, 0.33 आएगा, तो इसलिए मैं ए को रॉन्ग कंसीडर कर लूंगा। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट केस पे।
ये CH4 बना रहा है, C2H4 बना रहा है और C3H6 बना रहा है। तो अगर मैं बैलेंस करूं तो मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा तो ये बैलेंस हो जाएगा, तो मेरे पास टोटल C8 हो जाएंगे और H18 हो जाएंगे। ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? तो अगर मोल्स देखूं तो टोटल मोल्स कितने हैं? 4 हैं प्रोडक्ट के, और मीथेन इथीन के मोल्स कितने? 2 हैं। तो इथीन का मोल फ्रैक्शन 0.5 आएगा, इसका मोल फ्रैक्शन 0.25 आएगा और इसका मोल फ्रैक्शन 0.25 आएगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? तो इसका मतलब ये हुआ कि बी हमारा प्रोबेबल आंसर हो सकता है। बट अगर हम उसी तरह वेरीफाई करें C9H20 को, तो ये क्या बनाएगा? CH4, C2H4 एंड ये मैं इससे बना रहा हूं, ठीक है? और क्या बनाएगा? C3H6। अब अगर मैं इक्वेशन बैलेंस करूं तो मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, तो मेरी इक्वेशन बैलेंस होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेट प्रोपीन का मोल फ्रैक्शन 0.5 हो गया, जिसकी वजह से सी रॉन्ग हो गया इस केस में। ये पॉइंट भी क्लियर है सबको? और इथीन का मोल फ्रैक्शन इस केस में 0.25 हो गया, और उन्होंने हमें दिया हुआ है कि इथीन का मोल फ्रैक्शन क्या आना चाहिए था? 0.5 आना चाहिए था। ये बात समझ में आ रही है सबको? ओके, सो वी मार्क्ड सी रॉन्ग, तो हमारा अभी तक प्रोबेबल आंसर बी है। लेट मी चेक द डी। अगर मैं डी से बनाऊं तो मीथेन, इथेन, इथीन सॉरी, एंड प्रोपीन। तो अगर इसको मैं बैलेंस करूं तो मैं यहाँ पे 3 लगाऊंगा तो मेरे पास कार्बन 11 हो जाएंगे, और जो है ना 24 हाइड्रोजन हो जाएंगे। 3 6 18, 18 प्लस 9 2 एंड 3 3 4 12, 12 प्लस 4 16। इस तरह मेरी इक्वेशन साइड अब करेक्टली बैलेंस हो रही है। 2 4 8, 6 2 12 जी। और अगर इस केस में मैं मोल फ्रैक्शन देखूं तो मीथेन के मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे? 2/5, जो कि 0.2 के इक्वल आएंगे। तो डी भी रॉन्ग हो गया। सो बी इज अवर करेक्ट आंसर। जी, इस तरह क्लियर हुआ आप सबको? यस हूर, आपका भी पॉइंट क्लियर हो गया ना? हमने इक्वेशंस बैलेंस कर ली और उनके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ 0.25 का मोल फ्रैक्शन सिर्फ बी में ही मिल रहा है और किसी में 0.25 का मोल फ्रैक्शन नहीं आ रहा। जी, ये क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 39। Which compound does not show cis trans isomerism? इनमें से कौन सा कंपाउंड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा? तो अगर मैं ये देखूं तो ये पेंटुईन है, 1 2 3 4 5। 2 पे डबल बॉन्ड है और 2 पे ही मिथाइल है, तो दोनों ग्रुप सेम हो गए, तो इसीलिए ये नहीं करेगा। तो अगर ये नहीं करेगा तो यही आंसर है। तो 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, क्योंकि सिस ट्रांस शो करने के लिए जो है
डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, और उन्होंने पूछा कि कौन सा नहीं कर रहा, तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ब्लू से, इस पे दोनों CH3 ग्रुप्स हैं, तो इसीलिए ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो 39 का करेक्ट आंसर ए होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 40, which formula show propanone and propanol as a different compounds? ओके, तो अगर मैं प्रोपानॉन और प्रोपानन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O होगा, बट अगर मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखूं तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3COCH3 और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3CH2CHO होगा। ठीक है, और इसी तरह स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा तो डिस्प्लेड फॉर्मूला भी डिफरेंट होगा, तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ओके, ये वाला लास्ट पेज है, बस क्वेश्चन नंबर 44 पे एंड करेंगे। How many isomers with the formula C5H10 have the structures that involve pi bonding? तो पेंटेन यानी कि पेंटेन और जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ओके, सो एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा, डबल बॉन्ड की पोजीशन सेकंड पे आ गई। तीसरा, ब्रांच आ गई और डबल बॉन्ड यहाँ पर, और उसी ब्रांच में डबल बॉन्ड यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट्स यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकता है इसका? हम्म, एक मिनट रुक जाइएगा, मेरा जरा वो डिस्कनेक्ट हो गया है। अच्छा, इस केस में एक और ये भी तो हो सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाए। बहुत सारे लोगों ने लीव कर दिया। ओके, और अगर 5 कार्बन हैं, मेरे पास 5 स्ट्रक्चर बन गए और सब में पाई बॉन्ड है। मुझे लग रहा है कि इसका एक आइसोमर, जी तीशा, बिल्कुल। तो अगर मैं थर्ड आइसोमर में ये ब्रांच यहाँ पे ले जाऊं तो ये मेरा 6 बन जाएगा। सो 1 2 3 4 5 6, सो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाउ मेनी आइसोमेरिक एस्टर्स हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O2? तो देखें, C4H8O2 के लिए पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 3 कार्बन इधर हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इन तीनों में से तीनों कार्बन इधर हो बस इस तरह ज्वाइन हो। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक कार्बन इधर आ जाए और 2 कार्बन इधर रह जाए।
और चौथी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक और कार्बन इधर आ जाए और इधर एक कार्बन रह जाए। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ये पॉइंट क्लियर है सबको? Question number 43. Which statement does not correctly describe the polymer PVC? Combustion of PVC produces a acidic gas. Yes, it is correct. They are asking for the not correct because PVC have a chlorine, so a acidic gas HCl will produce. PVC molecules are saturated. Yes, this statement is correct because all the polymers have a single bonds. The empirical formula is same as the empirical formula of the monomer. ठीक है, पीवीसी का और उसके मोनोमर का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? सेम ही होगा। ये भी करेक्ट है। तो डी क्यों करेक्ट है? क्योंकि डी क्यों करेक्टली डिस्क्राइब नहीं कर रहा? क्योंकि देखिए हम ऊपर विनाइल क्लोराइड पढ़ के आए थे, डेट इज अ क्लोरोइथीन, तो उसमें दो क्लोरीन नहीं होते, एक क्लोरीन होता है। ये देख लीजिए यहाँ पे हमने कहाँ पे किया था। सी, देयर इज अ वन क्लोरीन, इट इज अ क्लोरोइथीन, तो एक क्लोरीन होता है और यहाँ पे इन्होंने दो क्लोरीन बताए हुए हैं, तो इस वजह से 43 का करेक्ट आंसर डी होगा। Oct1ene is subjected to a thermal cracking. ओके, ये आज अभी हमने क्वेरी कर ली थी और इसका करेक्ट आंसर क्या था? ए, राइट। तो देखें 44 क्वेश्चंस हो गए हैं। ये जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था इसका लिंक, आप वहां से ये कंप्लीट जो है डाउनलोड कर सकते हैं फर्दर प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और 42 देखें, 42 में ईस्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। और ईस्टर ड्रॉ करने के लिए ये बात समझें, ये देखें, ये इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। ईस्टर का स्ट्रक्चर का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि सी डबल बॉन्ड ओ के साथ ऑक्सीजन हो और इस ऑक्सीजन के साथ कार्बन हो, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। तो उन्होंने आपको फॉर्मूला दिया कि C4H8O2 के ईस्टर्स बनाए, तो आपको चार कार्बन के ईस्टर बनाने हैं ना, और ये ईस्टर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो हमने पहले स्टार्ट किया कि इस सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एक ही इसी कार्बन को रखा और बाकी जो तीन कार्बन है वो इधर ड्रॉ कर दिए, ठीक है। एंड देन HC डबल बॉन्ड ओ, और उन तीन कार्बन को इस तरह ड्रॉ कर दिया कि मिडिल कार्बन से ऑक्सीजन अटैच हो रहा है, तो ये दूसरा आइसोमर बन गया। अच्छा, रिमेनिंग जो पोजीशंस हैं अगर मैं उन पे हाइड्रोजन्स की एम्प्टी स्पेसेस बना दूं तो आप काउंट करेंगे तो आपको हाइड्रोजन्स का काउंट 8 ही मिलेगा इन टोटल, C4H8O2। तो ये तो दो हो गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है कि अब मैं कार्बन को शिफ्ट करना शुरू कर दूं। तीन कार्बन थे टोटल यहाँ पे, तीन में से एक यहाँ ले आया और एक यहाँ पे बच गया, ठीक है। तो ये थर्ड आइसोमर बन गया। और फोर्थ आइसोमर के लिए मैंने क्या किया, देखिए मैं इस कार्बन को नहीं हटा सकता, बट मैं उधर दो कार्बन थे तो मैं एक और कार्बन को इधर ले आया। So we get the four isomers of ester having a molecular formula C4H8O2। जी, क्लियर हो गया सबको? 44 का सॉल्विंग मेथड उमर, ओके, ये देख लें। Oct1ene था ना, बल्कि पहले ये देख लें, यहां से समझ में आ रहा है ये वाला ऑप्शन, ये जो ये हमने यहाँ पे बैलेंस करके किया था।
क्योंकि कार्बन हमने पहले ही बैलेंस कर लिए थे। देखिए ना, 8 कार्बन है यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे 3 प्लेस किया, अभी मैं हाइड्रोजन को हटा रहा हूँ, तो 3 प्लेस करने की वजह से यहाँ पे कार्बन कितने हो गए, 6 हो गए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। ऐड करें, 16 कार्बन इस साइड भी हो गए, और सॉरी इस साइड 8 नहीं है, इस साइड भी 16 है, क्योंकि मैंने 2 कोएफिशिएंट प्लेस किया था। ठीक है, फिर उसके बाद इसी तरह हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया। जी क्लियर है। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। कल स्टार्ट करेंगे और कल हमारे पास है थर्ड। ओके, तो कल देखते हैं मैं के और क्या हम कर सकते हैं, बट अब मैं कल ऑर्गेनिक नहीं करवाऊंगा, ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। नाउ आई एम एंडिंग द क्लास, बाकी कल करेंगे। ओके, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज।